Oh, 10 people already. Wow. You put my face in the middle, Yes, like yes. before, and everybody. I Yeah, put that's your good. face front of everyone, and Khushbu, much will translate Who's today's this? session. I also put her. Oh my Krishna. Haribol. That's Khushbu, right? Yeah. Wow, it's a lot of people already there. What is? Haribol, Mata. Oh, the big Maharaj, the Maharans are there. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Nice to see Hare you all. Krishna. Please accept my obeisances, Prabhuji. Please accept mine. Of course, Prabhupada. We have a new setup in here. Wow, it's so very small here. Whole thing. Okay. Shall we start? What is everybody? I should see, right? Everybody here. Yeah, can you see Prabhuji, everyone? I see only you. Wow. Now it's a small little frame. Yes. No, that is Kushbu is there, me, and a little window is you. Prabhuji, you can turn on gallery view from right corner, top right corner. Okay, I got it. All little ones here. Okay. Thank you. You all for coming. Can you hear me? Everybody can hear me? Yes, Prabhuji, loud and clear. Thank you. So we're gonna do a little prayer and we're gonna start the nectar. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paskacha Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sivasya Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada. Prabhuji. Okay, yes. So Tell me. I said to you about one Mataji who want to provide the deities of Rukmani Krishna. So Correct. can I take 5 minutes now? She's showing now? Yes. Okay, I make spotlight too. Okay. Okay. Let's do it. Yes, just a minute. When Krishna Dwarkadish come, who am I say they cannot come in? I'm their servant. Yes, Priyalakshmi Mataji, please tell me something about. There's any sound? Darshana from Assam, Guwahati. I know. I did a lot of preaching in Assam too, you know. We opened up Assam at that time. Oh, this is the Rukmini Krishna temple.
Yeah, when we got there, there was no temple. We went to, I think we went to a top of some hill and we built a temple there or something. What is this temple in Guwahati? Prabhuji, Guwahati. Huh, This temple in Guwahati. interesting. A lot of devotees. That's nice. Can she speak or say something? Priyalakshmi Mataji, can you say something? No, Prabhuji, maybe in temple so many Okay, noises. That's why voice I know. will not come clear. The bandwidth is not big enough. Okay. Okay, Hare Krishna, Prabhuji. Now we Ah, okay, thank you, Prabhuji. okay. Thank you, Pushpo. Ready? So today we're going to develop some interesting. The idea was perfection of consciousness, purification of consciousness, by which we're going to attain perfection. Consciousness. Interesting word. Pushpo. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Okay. So अभी प्रभु जी बता रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब ये एक प्योरीफाई कर देगा, शुद्ध कर देगा हमारी चेतना को. यस प्रभु जी. So we study the word consciousness, okay, which in Latin means, comes from Latin conscientia, knowledge within oneself, being private too. It's knowledge about oneself, consciousness. You see, that's the word from the long time. Okay. प्रभु जी अभी बता रहे हैं जो एक शब्द है कॉन्शियसनेस, ये एक लैटिन शब्द है जो कॉन्शिया से आया है, जो टर्मिनोलॉजी जो होती है ना शब्द की वो, और इसका मतलब होता है वन सेल्फ, मतलब खुद के बारे में. यस प्रभु जी. So again, consciousness means with or together, and share, to know. So consciousness literally means knowing with oneself or internal knowing. ओके. प्रभु जी ये बता रहे हैं जो कॉन्शियसनेस जो ये शब्द है, ये एक साथ में ये बता दे उसका लिटरली मीनिंग जो है कि खुद के बारे में, खुद की जो इंटरनल जो अंतर मन की जो चेतना होती है उसके बारे में जो जानना होता है वो होता है. यस प्रभु जी. So we're going to discuss here this process of knowing oneself and what is the perfection. I just want to second get this right. And here, purification of consciousness. Okay, so we know ourselves. Every day we're going around doing things. So that is one level of knowing ourselves. प्रभु जी बता रहे कि हम आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे एक जो प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन करने के लिए कॉन्शियसनेस का और खुद को जानने का, उसको एक लेवल तक हम लेके जाएंगे और जानेंगे उसके बारे में. यस प्रभु जी. We know what we think, our desires that impulse our life in different directions, our ambitions. This is more in the mental platform. So we have our body, we're moving around, we have a mental state, our desires, everything, right? This is consciousness moving all these things. Okay. तो प्रभु जी ने बताया कि यहाँ पे हम देखेंगे जो डिजायर्स कैसे होती है, वो किस डायरेक्शन में जाती है, और जो एम्बिशियस जो हमारे होते हैं, मतलब एम्बिशियस बोले तो किस गोल में हमको जाना है.
वो सब हम, और वो मेंटल प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करते हैं वो सब बताएंगे प्रभु जी, और वो कैसे मूव करते हैं। यस प्रभु जी। So we're not speaking about the soul yet, but we're going to get there. So the consciousness is interacting with the material world. No, we're acting in the material world. We have jobs, we have friends, we have things that we want to do, things we did. So all this leaves an impression in the mind. ओके प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे हमारे मटेरियल लाइफ जो है उसमें वो कैसे वर्क करते, कैसे काम करते, जैसे हम जॉब पर जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, और जो अलग अलग चीज जो भी हम काम करते हैं वो एक अलग इंटेक्शन पे कैसे मिलती है, और कैसे, और है ना, मतलब वो हमारे कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाती है वो हमारे माइंड पे, हमारी चेतना पे। यस प्रभु जी। So the mind gets affected. Sometimes the mind is happy, sometimes the mind is sad, sometimes the mind is angry. See, and there is different things affects the body too. So this is the consciousness, is all these things. How to purify the consciousness and get clear, distilled consciousness, like distilled water. ओके तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है जो वो मिक्स जैसे हो जाती है बहुत सारी चीजों का मिलके, वो हमारे माइंड इफेक्ट करती है। कभी हम खुशी महसूस करते हैं, कभी हम दुख महसूस करते हैं, हमें कभी कभी गुस्सा आता है। ये सारी चीजें बहुत बार अफेक्ट करती है, बहुत बार इफेक्ट करती है हमारे पे। और कभी फिर मुझे बताएंगे कि हमें कैसे प्योरीफाई करना है, कैसे उसे शुद्ध करना है, जैसे एक पानी कैसे शुद्ध होता है एकदम शांत है वैसे। यस प्रभु जी। Pseudo pani, yes. We want to also pseudo consciousness. ओके प्रभु जी बताइए, जैसे पानी कैसे प्योर मतलब एकदम शुद्ध होता है, Right? वैसे हमारी कॉन्शियसनेस भी शुद्ध होनी चाहिए। यस प्रभु जी। So we know how to purify certain things. If our cloth is dirty, we purify by washing. If our body is being worked all day, it becomes a little bit contaminated because we sweat or do all kinds of things. We take a shower, we clean in different ways, right? So how do we purify the consciousness? You can see we can purify things in different ways. How we purify consciousness? प्रभु जी बता रहे कि जैसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसे हमें शुद्ध करना होता है, तो हम इसे कैसे साफ करते हैं। हमारी डेली लाइफ पे हम देखते हैं, जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उसे वॉश करके धोकर हम उसे क्लीन करते हैं। हमारी बॉडी पे हम पूरे दिन काम करते हैं, स्वेटिंग आ जाती है, पसीना आ जाता है, गंदगी जम जाती है कुछ ना कुछ, तो हम उसे भी साफ करने के लिए हम नहाते हैं, बाथ लेते हैं। और अब इसमें ऐसा है कि कॉन्शियसनेस जब हमारे कंटामिनेट हो जाए तो हम उसे कैसे प्योरीफाई करेंगे। यस प्रभु जी। We can purify consciousness a little bit by having good thoughts, good actions. We do good things. We purify our consciousness a little bit. ओके तो ये बता रहे कि हम जो ये प्योरिफिकेशन का, ये जो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो प्रोसेस है इसे हम कर सकते हैं अच्छे विचार से, अच्छे एक्शन से। मतलब हम कैसे किसी भी चीज को एक्शन लेना, मतलब आई होप समझ गए आप। और अच्छी चीजें करने से थोड़ा बहुत तो इस पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। यस प्रभु जी। But what is the process that we can have fast purification and in a great quantity, in a great amount of purification, perfection of that purification, perfecting consciousness? अभी प्रभु जी बता रहे कि ऐसा कौन सा एक कोई प्रोसेस है जो फास्ट है प्योरिफिकेशन, मतलब कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए, जो परफेक्ट हमें लेके जाए, जो हम एक ग्रेट मतलब एक बड़े अमाउंट में, एक बड़ी संख्या में, लार्ज स्केल पर हमारे वो
प्योरीफाई कर दे हमारे कॉन्शियसनेस को। यस प्रभु जी। right? So to do that, we need a help outside our own small process to purify our consciousness. प्रभु जी बता रहे कि हम एक चीज कर सकते हैं और हमें इस चीज की जरूरत है कि हेल्प, हम जो एक मदद लेते हैं बाहर से भी मदद ले सकते हैं खुद की, और मतलब से छोटे छोटे ये मदद ले सकते हैं खुद को प्योरीफाई करने के लिए। यस प्रभु जी। Just like if I want to learn mechanics, I can go dabble in the car, I go few things, motor here and there. I get some knowledge by dealing with that material element, but it's faster if I take the knowledge from a source that has full knowledge of mechanics and I can learn faster. ओके प्रभु जी ने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जो मैकेनिक होते हैं जो हमारी गाड़ी वगैरह जो ठीक करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, हम उनकी हेल्प लेके हम ये चीज समझ सकते हैं, मतलब उनसे एक लाइक डीलिंग करके हम वो नॉलेज ले सकते हैं कि उस चीज को फास्ट कैसे हमें प्योरीफाई, मतलब फास्ट उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल बताया प्रभु जी। यस प्रभु जी। It's very hard to purify one's consciousness while we are in the contaminated stage. You know, how to get out of that situation if we are blind by the circumstance that put us in the situation itself. You know, how to become free from that. We have exterior help, and that is the guru, the spiritual master, the Vaishnavas, and the Supreme Personality of Godhead. ओके प्रभु जी बता रहे कि ये बहुत मुश्किल होता है खुद को, ये जो कंटेमिनेट हम सिचुएशन में होते हैं, एक ऐसे स्टेज में होते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है उसमें से बाहर निकलने के लिए। तो उसमें से हम बाहर जल्दी से कैसे निकल सकते हैं, उसमें हम हेल्प करते हैं गुरु जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, वैष्णव जो डिवोटीज होते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है, और जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है मतलब कृष्ण भगवान जो है वो हमें मदद करते हैं। यस प्रभु जी। So basically, if I'm in illusion, how can I get out of illusion without help? Right? ओके प्रभु जी बता रहे कि एक बेसिकली देखने जाए तो हम एक इल्यूजन में, मतलब एक माया में होते हैं कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे निकलेंगे हमें समझ में नहीं आता, तो उस वक्त में हमें हेल्प की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है। यस प्रभु जी। So to purify consciousness, the process to acquire personal knowledge about our own selves is the process of yoga, bhakti yoga. प्रभु जी बताया कि जो प्योरिफिकेशन करना है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का शुद्धिकरण जो करना है, उसे प्रोसेस, वो जो एक प्रोसेस करने के लिए होता है उसका एक योग होता है जो नाम स्पेसिफिकली बताया भक्ति योग। यस प्रभु जी। It has to be a connection, living entity and the Supreme Personality of God. You have to have that connection. And that is what makes the process of consciousness arise and get purified by proper guidance, by proper contact with that energy. Just like I get in contact with the sun, I become purified by the sun. If I'm wet, I get dry. If the sun has a purifying rays. So we have to have in contact with the Supreme Personality of God. प्रभु जी ने बताया कि एक एग्जांपल बताया सन का, जैसे सूरज जो होता है जो कि वेस्ट जो मतलब बेकार जो चीजें होती है उसे प्योरीफाई कर देता है डेली, वैसे ही मतलब जैसे सन के कांटेक्ट में जो भी वेस्ट चीजें आएगी उसे प्योरीफाई कर देगा, वैसे ही हम जो भगवान के गाइडेंस में आएंगे, डिवोटीज के गाइडेंस में आएंगे तो हमारी भी वो चीज उनसे कनेक्शन बनने से वो प्योरीफाई होने लग जाती है। यस प्रभु। Now, the purification of consciousness, it says they have three degrees of purification. ओके प्रभु जी ने बताया प्योरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, हमारी चेतना के शुद्धिकरण करने के लिए 3 डिग्री होती है, मतलब 3 स्टेजेस कह सकते हैं हम
और भी प्रभु जी आगे बताएंगे। यस प्रभु जी। First degree is perfect. Second degree is more perfect. And the third degree is the most perfect. You see, they're all perfect, but there is still the 3 degrees. ओके, प्रभु जी ने अभी जैसे बताया था कि 3 डिग्री होती है, उसमें जो पहला होता है, पहली जो डिग्री होती है वो होती है परफेक्ट करने की, सेकंड होती है मोर परफेक्ट मतलब और परफेक्ट करने के लिए, तीसरी जो होती है मोस्ट मतलब उससे भी और परफेक्ट करने के लिए। इसमें देखेंगे कि परफेक्ट चीजें कॉमन है, लेकिन वो एक लेवल पे बढ़ती जाती है। यस प्रभु जी। Now, why something is perfect and something is most perfect? Why perfect is not perfect enough? ओके, प्रभु जी ने बताया कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ बहुत चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें परफेक्ट होती है, कुछ चीजें बहुत परफेक्ट होती है, मतलब एक अलग ही लेवल पर परफेक्ट होती है, तो ये डिफरेंस क्यों होता है? यस प्रभु जी। The perfection here is simple that the soul, the consciousness, is not affected by the material causality. The soul is not affected by the material world. This is the impersonal realization. You see, when we are in the impersonal realization, we attain some kind of a perfection. Brahmajyoti is a perfection. You see, but that's the most perfect, not yet, but it's perfect because you're out of the material consciousness. You are in the transcendental consciousness, you are in the higher consciousness, you are in the spiritual consciousness, but not there yet, not most perfected, but it's getting there. प्रभु जी ने बताया जो हमारी सोल होती है वो मतलब ऐसे ब्रह्म ज्योति में कहते हैं ना कि भगवान का और जो आत्मा का जो एक मिलन हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति में हम जाके मिल जाएंगे, वो एक परफेक्ट होता है, लेकिन मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। वो मोस्ट परफेक्ट भक्ति योग में ही होगा, स्पिरिचुअल मोस्ट परफेक्ट नहीं कह सकते उसे। यस प्रभु जी। You see, because the consciousness to be perfect has to fully manifest all his potentiality. You see, now you can say a seed. You take a seed. The seed is the tree, but it's not. The potentiality is not there yet. Then the seed becomes a small little tree. Not there yet. And then the tree becomes beautiful and give fruits. Now is the full potential there. But in the tree stage, it is still the tree. You see, the seed, the small tree, and the big tree. प्रभु जी ने बताया कि कॉन्शियसनेस को प्योर परफेक्ट बनाने के लिए जैसे प्रभु जी ने एग्जांपल दिया है, वो कैसे मतलब बाहर आएगा, कैसे मैनिफेस्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, एक सीड जो बीज होता है वो उगता है, फिर वो छोटा स्मॉल प्लांट बनता है, फिर वो बड़ा होता है, ट्री बनता है, फिर वो बहुत सुंदर बनता है, वो फल फ्रूट देने लग जाता है। ऐसे इसके भी एक स्टेजेस है, वैसे ही कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए भी 3 डिग्री जो बताई वैसे ही है। यस प्रभु जी। So the purification of consciousness is the drive of the living entity to become self-aware in the highest potentiality. Self-aware that this is a tree that gives fruits. You see, not just seed, not just a small tree, but a tree that gives fruit. That is the purification of consciousness. It's a trajectory. प्रभु जी ने बताया जैसे हमारी जो हम जो लिविंग एंटिटी, हम जो आत्मा है, इसको प्योरीफाई करने के लिए भी जो जैसे ट्री का होता है, ना ही हमें सिर्फ बीज रह जाना है, ना ही हमें ट्री रहना है, एक बड़ा ट्री बनना है, फलता फूलता ट्री बनना है, तभी वो चीज मैनिफेस्ट मतलब एकदम क्लियर प्योरिफिकेशन होगा। यस प्रभु जी। So how you purify consciousness? By acting in the constitutional position of the consciousness. You see, constitution, what is the consciousness? Therefore, is there in relation to the Supreme Lord. And the more you get close to the Lord, the more your consciousness becomes purified. See, that's how you purify. Therefore,
we have an incredible mercy from who? From Lord Chaitanya, the holy name. प्रभु जी ने बताया कि हम कैसे प्योरीफाई करेंगे अपने कॉन्शियसनेस को ज्यादा मतलब बड़े स्तर पे एक्टिंग एक कुछ एक्शन करने से जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है कि हम भगवान के साथ ही रहते हैं। ये हमारा जो रिलेशन है वो हम उनके साथ जैसे जुड़ेंगे हम और प्योरीफाई होते जाएंगे। और ये हमें कैसे मिलेगा? बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य और हरि नाम से हमें मिलेगा। यस प्रभु जी। The holy name is amazing blessings from the Supreme Personality of God coming to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Chetoda Paramadanam. It clears the mirror of the mind. The activities every day we do, previous activities from previous life, things that are constraining our mind, our desires, our ambitions. You see, it clears the mirror of the mind, and we can see our beautiful spirit soul in relation to the Lord, in service. ओके, प्रभु जी ने बताया जो हरि नाम जो है वो एक अमेजिंग, एक बहुत शक्ति है उसके अंदर, एक आशीर्वाद की तरह है हमारे पास, जो हमें भगवान से जोड़ता है। और जो हमारा जो है चेतो दर्पण मार्जनम जो कहते हैं, दर्पण मतलब जो मिरर होता है, जो कांच होता है, वो कैसे एकदम क्लीन कर देता है, वैसे ही हमारे माइंड को भी हरिनाम जो है वो क्लीन कर देता है। और हमारी जो डिजायर, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो गोल है, उन सबको क्लीन कर देता है। और एक बहुत सुंदर एक रिलेशन हमारा भगवान से बनता है। हरिनाम में इतनी शक्ति, इतने आशीर्वाद है। यस प्रभु जी। So the process of purifying the consciousness is the process to approach the supreme consciousness and have a relationship with that consciousness. ओके, प्रोसेस जो है हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना को साफ करने का ये जो प्रोसेस है वो है हमें अप्रोच करना, मतलब हम भगवान के पास हम जाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत होता है। और हमारा जो रिलेशन, हमारा जो संबंध है भगवान से, वो हम बनाएंगे। यस प्रभु जी, सब क्लियर हो। This is why we practice bhakti yoga. It's yoga, bhakti of devotion, of loving devotion to the Lord. See, we practice bhakti yoga. So where this yoga word come from? From the root Sanskrit of yuk, means to connect. Yuk, like the British got this word, it's called the yoke. When you have two bulls together, they're plowing the fields. So that's called the yoke, something that connect one thing with the other. You see? So what is that yoga? What we're connecting here? You see, we have to understand that. ओके, प्रभु जी ने बताया कि ये एक जो हमारा जो प्योरिफिकेशन, कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने का एक जो प्रोसेस है वो हमें मिलेगा भक्ति योग से। और जो योग शब्द है ये कहाँ से आता है और इसका मतलब क्या है? योग का मतलब जो आता है, मतलब कनेक्ट करना, प्लस करना, जिसे सम भी कहते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में। तो उससे हमारा प्योरिफिकेशन, सॉरी, कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होगा। वो फिर And this is in many different process of spiritual work. For example, we have the word religion. Religion. This is from Latin. Religare. Ligare means to connect. Re means to connect again. Religion means yoga. It's the same. It's to reconnect something with something. What we're reconnecting? The jiva, us, with the Supreme Lord. But Bhakti Yoga tells how to connect. And when you connect, what is that you're going to do? Sorry, Prabhuji, I was disturbed little. Can you please translate again? Sorry, can you repeat again? Okay. Sorry. We have the word religare, religion. Okay, religion is an English word. It comes from the Latin, means to religare, to connect again. Ligare means to connect to things. Re, to connect again, these two things.
We're connecting the jiva with the supreme consciousness, you see? But this is not just religion perfect, it's most perfect because we connect with the supreme and we have what the connection means. It means activities in love and devotion, give and take. You are actually interacting with the Lord in devotional service. Very sweet. प्रभु जी ने बताया जो रिलीजन जो शब्द है वो एक लैटिन मतलब लैटिन से ये शब्द आया है और इसका मतलब ये होता है कि जो हम जीव है उसे भगवान से मिलाना, फिर से कनेक्ट करना। और वो हम कैसे हो सकते हैं? बाय लविंग सर्विस से, हम प्रेम भक्ति से हम फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। हम अलग अलग सेवाएं करके, अलग अलग एक्टिविटीज करके हम फिर से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, जो बहुत वेरी स्वीट, बहुत स्वीट होगा। यस प्रभु जी। So, the purification of consciousness is what we do every day. We have to do purification and see in two ways. Just like we're driving a car, we're pressing the accelerator. When you press the accelerator, we don't press the brakes. When we press the brakes, we don't press the accelerator. We cannot press them together. So when we are aiming for purification, we have to make sure we not get impure and do things that push the impurity into us. Understood? प्रभु जी ने बताया, ओके प्रभु जी ने बताया कि जो हमें प्योरीफाई करना है हमारी कॉन्शियसनेस को, और उसके लिए हमें हर दिन इस पर काम करना पड़ेगा। जैसे दो चीज होती है, हम जब कार ड्राइव करते हैं उसमें हम एक्सीलेटर भी दबाते हैं जो हमें रेस देता है कार आगे बढ़ाने के लिए, और जो दूसरा जो होता है ब्रेक होता है जिससे हमें हमारी गाड़ी रुकती है। लेकिन हम उन दोनों एक्टिविटीज को अलग अलग स्तर पे करेंगे, दोनों को साथ में नहीं कर सकते। वैसे ही हम जब भक्ति योग में हम जब जुड़ेंगे, हमारे प्योरीफाई करेंगे हमारी कॉन्शियसनेस को, तब उस टाइम में हमारा इम्प्योरिटी और जो मतलब प्योरिफिकेशन है, मतलब ये दो चीजें ना एक साथ में नहीं आ सकती है। एक साथ में वो प्योरीफाई करने के लिए आगे ही बढ़ता चला जाएगा। यस प्रभु जी। You see, to be pure, you have to make sure that impurity does not come into you, to protect yourself against impurity. So therefore, there is many instructions in this matter, particularly, association. You associate with devotees, you associate not in gossip, you associate in Krishna Katha, in a discussion of Krishna and Krishna activities that actually elevate one. And you avoid discussion that things that do not pertain to that class of discussion. You avoid discussing things that brings your consciousness down, and you should see the difference. Okay. प्रभु जी ने बताया कि हमको खुद को प्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, खुद को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए, जैसे हमको उस पर काम करना होगा। जैसे एसोसिएशन है, मतलब साधु संग जो है, हमारे डिवोटीज को हमको साधु संग करना होगा। उससे क्या होगा कि हम गॉसिप्स करना बंद कर देंगे, जो हमें अवॉइड करना है, और हम कृष्ण कथा पे ध्यान देने लगेंगे अलग अलग। और ये जो एक्टिविटीज है मतलब पहले तो भक्तों का संग करना, फिर कृष्ण कथा सुनना, ये एक्टिविटीज जो है हमें एलिवेट करेंगे, मतलब हमें और ऊपर तक पहुंचाएगी हमारी कॉन्शियसनेस को। ये हम खुद करेंगे ना जब, तब हम इसका डिफरेंस देख पाएंगे। और हमें ये चीज, अगर हम कृष्ण कथा नहीं करेंगे तो हम और सारी गॉसिप्स वगैरह करेंगे, तो हमारे जो कॉन्शियसनेस है फिर से हम उसको हम फिर से डाउन आ देंगे। There's instructions in the nectar of devotion. One should associate devotees, avoid the association unknown devotees, because then it just drag you down. Now, we may associate with non-devotees because we have a job and we have students, so they're in the same class, but we don't give a heart to whatever they're saying or doing. We keep our distance and associate to a certain level just to keep
your job going, your student relation going, this and that. We don't give too much interest in become too close to those persons because they have contaminating ideas, and sometimes those ideas get you into trouble. Hey, let's do this, no, let's drink this, let's smoke that, and bring you to a platform that take you away from your devotional service. ओके, प्रभु जी ने जैसे बताया नेक्टर ऑफ डिवोशन एक जो बुक है, उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे ये कुछ स्टेप्स बताए हैं, जैसे एसोसिएशन लेना, भक्तों का संग लेना, और दूसरी ये भी चीज उसमें क्लियर बताई कि जो अभक्त है, जो नॉन डिवोटी है, उनका संग नहीं करना, उससे हमें बचना है। और ये चीज तो दो चीज क्लियर है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लेना है। कब जब हम स्टूडेंट लाइफ में है, हम ऑफिस वगैरह का काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पे हमें उनसे मिलके हमें उनसे बात करनी ही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा उनसे क्लोज नहीं जाना है। अगर हम बहुत ज्यादा उनके क्लोज चले जाएंगे तो हम खुद कंटेमिनेट हो जाएंगे, इम्प्योरीफाई होना शुरू हो जाएंगे हम, जिससे मतलब वो कुछ भी फिर जो भी एक्टिविटीज वो लोग करते हैं, जैसे चलिए थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा मांस वगैरह थोड़ा खा लेते हैं, पा लेते हैं, वैसा हम भी कंटेमिनेट होना शुरू ना हो जाए। इसलिए हम बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं रहना है उनके साथ। क्या प्रभु जी? And sometimes, even amongst devotees, there is neophyte devotee, there is a Madhya Adhikari, and there is Uttama Adhikari, there is advanced devotee. So even amongst devotee, we have to be careful how we associate, because sometimes the neophyte devotee and have some ideas and try to drag you down to his ideas, and you may lose your position a little bit, and you have to be careful. You have to give them the mercy. You see, you have to give them their association. But we don't take their association. We take association from the devotee is advancing platform, and we will take advance from them. Now, to be protected all the time, we are under authority. We are under a senior Vaishnava that we, we admire and we trust. And we grow with situation like marriage or decisions, and the Guru can help us make that decision. Otherwise, a senior Vaishnava can also help. We should always be a not protect, but under the guidance of a senior devotee or a Vaishnava friend that can help you navigate through the material world as you go through your life. Okay. प्रभु जी ने बताया कि जैसे दो तरह के भक्त होते हैं, एक मध्यम अधिकारी और एक उत्तम अधिकारी। जो मध्यम अधिकारी मतलब नियोफाइट डिवोटी, मतलब जो अभी अभी भक्त बने हैं, जिनको ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, हमको क्या करना है, मतलब उनसे ज्यादा एसोसिएशन लेना नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अभी भी उनके पास ऐसी चीजें हो जो नहीं हो सकते ऐसे। तो हमें जो उत्तम अधिकारी, जो सीनियर डिवोटीज है, उनका एसोसिएशन लेना है, उनसे सीखना है, और हम उनसे ऐसा हम करेंगे तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, एक शील्ड में रहेंगे लाइक, और हम उनसे एडमायर होंगे। और हमें जो मेजर डिसीजंस जो होते हैं, तो वो हमें हमारे श्री गुरु के अंदर गाइडेंस में लेने चाहिए, या फिर सीनियर डिवोटीज के गाइडेंस में लेना चाहिए। जैसे मैरिज हो गया, ये एक एग्जाम्पल प्रभु जी ने बताया। ऐसे कोई बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जो हमें, जो उत्तम अधिकारी, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके अंडर में रह के हमें डिसीजन लेने चाहिए, तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और इम्प्योरीफाई नहीं होंगे। यस प्रभु। So we also have a question, the same question that Arjuna had it 5,184 years ago. That's the time of the Kurukshetra. It's okay, I just made up that number, but it's more than 5,000 years. So he asked Krishna, how do you know who is Krishna consciousness? How the person walks, how they think, how they behave? See, Arjuna was asking, what is the clue to can see what's advanced devotee? ओके, प्रभु जी ने बताया कि जैसे अर्जुन का जो सवाल था कृष्ण से, मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध में, क्योंकि मतलब अर्जुन ने भगवान
भगवान कृष्ण से पूछा कि बताए कि जो शुद्ध भक्त होता है उसे हम कैसे समझेंगे, कैसे हम उन्हें जान पाएंगे, देख करके वो क्या, उनकी क्या सोच होती है, वो कैसे चलते हैं, मतलब उन्हें कैसे समझ पाएंगे कि कौन एडवांस डिवोटी है। यस प्रभु जी। So in the part of the Bhagavad Gita, Krishna gave an answer, okay? But here it's more explicit in this, the text 54, the chapter 18 Bhagavad Gita. This is a famous verse. Bhuta prasanatma na sochati na kangsati sama sarveshu bhuteshu mad bhakting lavate param. ओके, प्रभु जी ने बताया कि जैसे अर्जुन ने जो सवाल पूछा था भगवान कृष्ण से, उसका जवाब भगवान देते हैं भगवत गीता में, और वो है चैप्टर नंबर 18 के 54 नंबर श्लोक में। और जो प्रभु जी ने जो रिसाइट अभी जो श्लोक किया था, मैं नहीं कर पाऊंगी, ब्रह्म पूछा करके समथिंग जो था वो। यस प्रभु जी। So here in this verse, Krishna is telling when there is a perfection or there's purification of consciousness, what is the external signs of that? Hold on, let me put this. What is the manifestation? External manifestation. So it's a one who is thus transcendentally situated at once realize the supreme Brahman and becomes fully joyful. You can translate that? ओके, अभी प्रभु जी ने बताया कि कृष्णा जो बता रहे हैं इस श्लोक का जो अर्थ है उसमें कि जो प्योरिफिकेशन जो करना है वो हम एक्सटर्नल, जो एक बाहरी एक साइन होता है, बाहर से पता चलता है कि वो फुली जॉयफुल है, मतलब बहुत आनंदमय है, वो बहुत खुश है, वो ये मैनिफेस्ट होता है, उससे पता चलता है। यस प्रभु। He never laments or desires to have anything. Carry on. यस, वो कभी भी दुख नहीं जताता है, मतलब उसकी इच्छा ना पूरी होने पे। यस, यस प्रभु। Is equally disposed towards every living entity. व्हाट प्रभु जी? Is equally disposed. ओके, Is equally disposed. ओके, वो और जितनी भी लिविंग एंटिटी है, मतलब हर कोई जीव जो है वो उसको एक नजर से ही देखता है, सबको एक समान मानता है। So, and this is the most important. In that state, he attains pure devotional service unto me. ओके, इन दोनों स्टेज में रहकर, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों स्टेज में रहकर ही वो मुझे जान सकता है। यस प्रभु। So, first part of the verse, the Lord said, one who does transcendent. Why? Because in the previous verse, the Lord is saying, you know, being purified by intelligence, controlling your mind, giving up objects of sense gratification, being free from attachment. He gives everything you're doing. You do this, you realize the supreme Brahman and becomes joyful. See, perfect. Okay, perfect. It's nice if you had the book. I know. It's better if you had the book with you, but in the previous verse, he's giving different ways, you know, you become purified, you know, so it's a big verse in here, become detached, give away your material attachments, free from false ego, like that. So in this way, he once he realized the supreme Brahman. ओके, प्रभु जी ने बताया कि ये जो पिछला वाला जो श्लोक था 18.54, अभी अगले वाले श्लोक में जो कृष्णा बता रहे हैं कि डिटैच कैसे होना है, मतलब माइंड, बहुत सारी मटेरियल जो भी चीजें होती है उसे डिटैच होना है, फॉल्स ईगो से, खुद के माइंड मतलब डिजायर से, इन सारी चीजों से डिटैच, मतलब खुद को अलग कर देना है। यस प्रभु जी। So in this Brahman stage, na sochati na kansati, he doesn't lament, he doesn't hanker for anything. Correct? He doesn't lament, he doesn't hankering for anything. He doesn't want anything. ओके,
प्रभु जी ने बताया कि ये स्टेज में आके वो जो पर्सन है, वो जो लिविंग एंटिटी, वो ब्रह्मभूत स्टेज में मतलब उसमें आ जाएगी, और वो ना ही कोई डिजायर पूरी होने पे ना वो शोक करेगा, ना ही वो खुशी जताएगा, इक्वल रहेगा। यस प्रभु जी। So in that stage, what happened? He attains pure devotional service to me, most perfect. See, here is Supreme Brahman, he becomes perfect. But once he progresses, na sochati, na kangsati, then he attains pure devotional service, most perfect. See, all the perfections are there. What? तो अभी प्रभु जी ने बताया कि मोस्ट परफेक्ट कैसे बनना है। इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि सारी चीजों से डिटैच होके, और जो इस स्टेज पे आएगा वही मुझे जान पाएगा, और यही सबसे एकदम परफेक्ट जो होता है ना, मोस्ट परफेक्ट वे होगी। यस प्रभु जी। So, the purification of consciousness is affected by the practice. Purification means cleaning, pure, clean, right? How you become pure, clean. So you become in a state of consciousness that you're pure. You don't let contamination come to your mind, your body, or anything. ओके, प्रभु जी ने बताया प्योरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस को, मतलब प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारे कॉन्शियसनेस को, ये एक इस तरीके से है कि हमें उस चीज को सफाया करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तभी हम मतलब इम्प्योरिटी से खुद को क्लीन कर पाएंगे और प्योरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के स्टेज पर आ सकेंगे। यस प्रभु जी। And Prabhupada said, there's purity in the body. So you get up in the morning, you take shower, you do a hygiene, the body's pure, right? Then there's purification of the mind. You chant the holy name, you read, you participate in different aspects of Krishna consciousness, you see? And there is purification of the soul. The soul is actively engaged in devotional service, doing action in service. You are preaching, you are distributing books, you are cooking for Krishna, you are shopping for Krishna, okay? For vegetables, right? They're going to cook a meal for Krishna, not, anyway. So you are engaged in a way that in contact with Krishna, that's how the mind becomes purified. Mind means body, mind, and soul becomes purified. Okay. प्रभु जी ने भी बताया कि जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हम जैसे सवेरे उठते हैं, हमारी बॉडी, हमारा शरीर जो अशुद्ध हो जाता है, हम उसे शुद्ध करने के लिए हम स्नान करते हैं, वैसे ही वो स्नान करने के बाद फिर हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम जपा करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जो भी डिवोशनल सर्विस होती है उसमें हम पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक ये जो प्रोसेस है उसमें हम जुड़ते हैं, और ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज करने से हमारा जो सोल है और हमारा जो माइंड होता है वो प्योर होता है। और जैसे अलग अलग कुछ एक्टिविटीज बताई, जैसे प्रीचिंग करना है, बुक वितरण करना है, भगवान के लिए खाना बनाना, मतलब भोग बनाना है, और शॉपिंग करना है, और जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हम खरीद के फिर भगवान के लिए भोग बनाएंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। ऐसे हम और इस तरीके से रह के हम खुद को एंगेज कर लेंगे भगवान के सेवा में, और उससे हम भगवान के और नजदीक जाएंगे, और हमारा जो रिलेशन, हमारा जो कनेक्शन है वो भगवान से बना पाएंगे। यस प्रभु। Right? Krishna said, Patrang pushpam palam toyam. You offer me a leaf, a flower, a little bit of water, and I'll be very happy. You see? And it's amazing personality of God. He doesn't ask for a Ferrari, or he doesn't ask for, a palace. He doesn't ask for, say expensive things. What he asks, anybody, anywhere, anytime can do. A leaf, a flower, a little bit of water. So what he is asking actually is our committed devotion towards him. And he eats that devotion very much. He's very hungry for that devotion, I can tell you.
प्रभु जी ने बताया कि जैसे एक जो श्लोक है भगवान कृष्ण जो खुद कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब भगवान को सारी चीजें छोटे छोटे स्तर पे ही चलेगी, वो कुछ बड़ा एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मांग रहे हैं कि तुम हमें फरारी दे दो, कि हमें बड़ा कोई जगह बड़ा कोई पैलेस खरीद के दे दो, कि न, वो हमसे छोटी छोटी चीजें ही मांग रहे हैं। जैसे पत्रम पुष्प मतलब छोटे सा कोई तुलसी का पत्ता हमें मुझे ऑफर कर दो, थोड़ा थोड़ा सा पानी मुझे ऑफर कर दो, वो छोटी छोटी चीजें ही मांग रहे हैं, वो उससे उससे खुश हो जाते हैं। और उसमें हमारा क्या चाहिए, भाव चाहिए। और भगवान इस चीज के भूखे हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं कि वो कमिटमेंट हो, मतलब उसके कमिटमेंट जो एकदम पक्की हो मेरी तरफ। यस प्रभु जी। Krishna has Garuda. He doesn't need a Ferrari. Ferrari actually is that no interest. No, Garuda, yeah, that is something. So, where was so the devotion is it's a purificatory process. There's another process also. What प्रभु जी? The devotion is the process of purification of the consciousness. There is another related process of purification. ओके, अभी प्रभु जी ने जैसा बताया कि भगवान को फरारी वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि भगवान के पास गरुड़ है, अपना ही वाहन है, तो उनको फरारी की कोई जरूरत नहीं है, जो फरारी से बहुत ज्यादा बेहतर अच्छा है। और और Good. जो डिवोशनल जो सर्विस है, जो डिवोशनल सर्विस है प्योरीफाई करने के लिए हमारा कॉन्शियसनेस, उससे एक अलग तरीका भी है। यस प्रभु जी। You see, the process to purify the consciousness very quickly, because there's things that we can do very quickly that we wouldn't do very quickly. For example, we have a car, we can do very quickly from Mayapur to Calcutta in 2 hours. Before, if you walk, it would maybe take like a week, 2 weeks if you go walking. If you take airplane, you go another side of the world, it will take, who knows, 6 months to go by boat to London. And if you can go, for like 6 hours, 8 hours, you get to London from Calcutta, Delhi. You see, technology makes things faster. We can, do many things faster with technology. So we can do also faster purification by using bhakti technology. ओके, प्रभु जी ने बताया कि हमारा जो एक क्विकली मतलब एक बहुत एक फास्ट तरीका भी है। जैसे अलग अलग तरीके, जैसे प्रभु जी ने बताया कि जैसे हमारे पास कार है, तो हम मायापुर से कलकत्ता जा सकते हैं 2 घंटे के समय के दौरान में। और एक दूसरा तरीका तो जो होता है, हम वॉकिंग से भी जा सकते हैं, जो हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, लाइक दूसरा 1-2 दिन भी ले सकता है। फिर एरोप्लेन की भी फैसिलिटी है, बोट बोट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। एरोप्लेन की फैसिलिटी है जो हमें एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती है। ये सारी चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा आ रही है, और ये सारी चीजें हमें कहते हैं फास्ट मूव एक जगह से दूसरी जगह करती है। तो इन सबको देखते हुए भक्ति जो है, भक्ति टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे हमारे लाइफ में, और फास्ट क्विकली प्योरीफाई हो जाएंगे। यस प्रभु जी। This is bhakti technology. It works on the realm of consciousness. You see, it's not of this material world. And if we read in the Bhagavad Gita, Krishna said, you see, Krishna is the supreme consciousness. And our purification is to get closer to him. And the closer we get, the higher our purification will be in our consciousness. जैसे प्रभु जी ने बताया कि भक्ति टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस को प्योर करेगा और क्विकली उसे फास्ट ले जाएगा, ना कि हमारे मटेरियल वर्ल्ड को। और भगवत गीता में भगवान ने जो कहा है कि वो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है, और हमें उनसे क्लोजर में जाना है, तो वो हम जैसे हम उनके क्लोज जाएंगे, हम उनसे नजदीक में जाएंगे, हमारी जो प्योरिफिकेशन है वो भी एक अलग लेवल, एक हायर लेवल पे प्योरीफाई होगी। यस प्रभु जी। So, Krishna is saying the Bhagavad Gita is giving clues for us to follow and get a result. One of those clues
he said, no one is more dear to me than those who teach the secret to the other devotees. You see, if we take a devotee, he may be not so advanced, we guide them, we teach them, we instruct them, we counseling with them, then Krishna is very pleased. And he said that, and he said, never will be anything else you can do make more pleased. This is the thing. Before, now, ever, in the future. प्रभु जी ने बताया कि जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक जो क्लू बताए हैं, एक जो कुछ साइन बताए हैं जो भगवान को खुश करते हैं, और हम अगर इसे फॉलो करेंगे तो हमें इसका परिणाम भी मिलेगा। और वो ये है कि जो मुझे इस चीज से प्रसन्न करता है बहुत ज्यादा, लाइक ये जो भक्ति का प्रोसेस है, ये सारी चीजें जो किसे समझाएगा, किसे टीच करेगा, किसे, भले तुम्हारे पास इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, जितना है उतना उसे गाइड करना, उसे काउंसलिंग करना, उसे हेल्प करना, मेरे इस भक्तियों के इस ज्ञान को उसे समझाना, ये चीज जो भी करता है, जो भक्त करता है, मैं उससे बहुत, वो मुझे बहुत डियर है, मुझे बहुत प्रिय है। ये चीज पहले भी थी, आज भी, और हमेशा वो, मतलब वो सोल जो भक्त है वो हमेशा मुझे प्रिय रहेगा। यस प्रभु जी। Because Krishna, he can, but generally he's not directly approaching the living entity. You see, he's approaching through the Sri Guru, through the devotee, Vaishnava. Why is that? Because when the living entity came in this material world, it was like a rebellious teenager. I'm going to the material world. I'm leaving this place. I'm doing my thing. I'm doing my thing. I know what I'm doing. We're rebellious. Krishna said, no, please don't go. We went anyway. So, to Krishna to come back and break the illusion of the living entity, you see, and the living entity may get more angry. Oh, I came here, now you try to disturb me, try to bring me back. So, the Vaishnava, the devotee of the Lord, he knows the heart of Krishna. He knows he wants the living entity, and he goes with the living entity, mano a mano, tete a tete, head to head, right there in the material world, not from the top down, but saying, try to bring the living entity, living with the living entity, slowly bring the living entity out of the material world. Krishna will be very happy with the devotee that helped the other devotee, doing something that's very dear to his heart. He promised not to interfere with the living entity, but we are interfering. We didn't make the promise, Krishna made, so we can interfere. That's called preaching. You see? So Krishna, he loves the devotee to take that task and wake the living entity as much as they can. प्रभु जी ने बताया कि अभी जो बताया था इसके पहले वाले में कि जो भक्त ये ज्ञान को जो मुझ तक लेके आता है दूसरे भक्तों को, वो मुझे बहुत प्रिय है। और वो क्यों प्रिय है? और कृष्णा एक ये चीज करता है कि हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट अप्रोच हमें नहीं करते हैं, हमें श्री गुरु जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनके थ्रू और वैष्णवों के थ्रू हमें अप्रोच, मतलब डायरेक्ट हम कृष्णा के पास नहीं जाते हैं, पहले हमें उनको अप्रोच करना पड़ता है, उनके पास जाना होता है। और ये क्यों होता है कि जैसे रेबेलियन, मतलब कैसे, रेबेलियन को क्या कहते हैं हिंदी में, थोड़ा कोई बताएगा? आंदोलन करना, मतलब उस चीज के अगेंस्ट में चले जाना है, कैसा कह सकते हैं। जैसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, हमने कह दिया कि नहीं, हमें यहाँ पे नहीं रहना, हम मटीरियल वर्ल्ड में जाएंगे, हम अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में जिएंगे। भगवान ने हमें मना कहा कि मत जाओ, फिर भी हम गए, भगवान की बात नहीं मानी, फिर हम यहाँ पे आ गए। अभी कृष्णा ने प्रॉमिस क्या किया है कि मैं इस लिविंग एंटिटी जो है, जो ये सोल है, मैं इसके
बीच में इसकी इच्छा के बीच में, इसकी विल पावर के बीच में मैं नहीं जाऊंगा, ये भगवान ने प्रॉमिस किया है। लेकिन भक्त ने, डिवोटी ने, टीचर मास्टर ने ये प्रॉमिस नहीं किया। तो जो भक्त है, विद्रोह हो गया। ओके, जो भक्त है वो बीच में जाता है, क्योंकि भक्त जानता है कि भगवान के हृदय में क्या है, भगवान के मन में क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, वो इसे जानता है। और वो भक्त जो होता है, जो भटका हुआ होता है, जो विद्रोह कर रहा होता है, उसे वापस लेके आता है भक्ति में और भगवान से जोड़ता है। और इसलिए भगवान को, कृष्णा को वो भक्त बहुत ज्यादा प्रिय है, जो दूसरी जो लिविंग एंटिटीज, जो सोल जो भटक रहे हैं वहां पे, उन्हें फिर से भगवान से कनेक्ट करवाता है। क्या प्रभु जी? So this is by the will of the Lord, our consciousness becomes purified by doing this sacred, confidential action of mentoring another Vaishnava in the path of devotional service. You see, that is totally in a transcendental platform. That is a purification that brings us close as associate of the Lord. ओके, प्रभु जी बताए कि ये एक जो इच्छा है, सॉरी, ये एक विल पावर है। भगवान की इच्छा से ही ये चीज पूरी होती है कि हमारा कॉन्शियसनेस प्योर होता है। और ये किससे होता है? भक्त जब हमें अप्रोच करते हैं, मतलब भगवान के पास हम जब जाते हैं, ये हमें कौन लेके जाता है? भक्त ही लेके जाते हैं। और ये भगवान की इच्छा से ही ये प्रोसेस जो होता है वो पूरा होता है। ये कनेक्शन जो बनता है भगवान की इच्छा से ही होता है। भले जो सीनियर डिवोटी और जो सोल है वो हमें भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से ही ये चीज पूरी होती है। और ये बहुत एक सीक्रेट है भगवान के पास जाने का, और भगवान इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यस प्रभु जी। If we try to purify our consciousness just ourselves, it's a little bit okay, but it's like a battery, a little battery. How much energy is in there? You see, how much energy can you use? But if you try to purify consciousness in the process of bhakti yoga, directly interacting with the Lord, fulfilling his desire, in mentoring another Vaishnava, you're like plugged in the electric grid. You have unlimited power. You have unlimited resources. You have unlimited blessings from the Lord. You plug in the outlet, in the wall. You're not just a little battery. You see, you have power to do many things. That's why Prabhupada, he came with 40 rupees to New York, right? $40 or whatever. Look what he did. You see, he has this potentiality. He was plugged in the grid of Krishna, and Krishna was guiding him all the way. So many other yogis, they try to do their purification, they're little batteries. They're using their own energy, how much they can go. And then goes poof, 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 and the battery's finished. How are you going to recharge? You need Krishna, you see? So we're smart. We're going direct to Krishna. We plug in the wall. We get this unlimited potentiality to do many things. Personal life of other people. प्रभु जी ने बताया कि जैसे कभी कभी ऐसा कोई सोचता है कि मैं खुद की मेंटलिटी, जो कॉन्शियसनेस तो है, मैं खुद ही प्योरीफाई करूंगा। वो ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना ही पावर है? हम लिमिटेड, हमारे पास सोर्सेज है, हम इतना नहीं ज्यादा कर सकते। हमारे पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड सोर्सेज है, लेकिन हमें जरूरत होती है किसी के हेल्प की। जो सीनियर डिवोटी है वो हमें मदद करते हैं। जैसे एक छोटी सी बैटरी होती है, उसमें और पावर कैसे ऐड करेंगे? उसका खुद का तो इंडिकेटर है, उसका पावर और ऐड हो सकता है बाय एसोसिएशन। वो ऐड होगा तो वो इसमें और ज्यादा पावर बढ़ जाएगा और वो और भक्ति योग में आगे बढ़ पाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क आए थे, जब उनके पास सिर्फ 40 रुपीज ही थे, तो और फिर वो आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने क्या कर दिया है। उनके पास एक वो पोटेंशियल था, वो पावर है उनके पास है, जो आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में। तो ये उन्होंने हमें भगवान से जोड़ दिया। उनके पास पूरा पूरा मतलब कहते हैं ना, एक लार्ज अमाउंट में एक बैटरी पावर था, बहुत ज्यादा उनके पास।
और छोटी छोटी सोल हमारे पास जो लिमिटेड छोटा छोटा जो पावर है उसमें प्रभुपाद ने हमें ऐड कर दिया और हम ब्लूम हो गए लाइक। यस प्रभु जी। So this is the highest purification of our consciousness. This is what we're looking for. Prabhupada gave us the highest. Okay? Brahma Bhuta Prasanatma. To be able to be perfect platform of no connection with the material world, just like the four Kumaras. They have no connection with the material world. They came to Vaikuntha and they said, no, cannot. And then Lord Vishnu came and he has Tulsi Devi in his feet, the leaves of Tulsi. So the four Kumaras, they were thinking, we are transcendentalists. See, we have perfection. But we smell this Tulsi from the feet of the Lord, we become attracted. But we know that nothing in this world, material world, can attract our attention. We are transcendental. What is this smell? See, Okay. that little pinprick. What is going on here? So they immediately surrender to the Lord because they figure out this is a transcendental reality. This is not the material world. The smell is transcendental. The Lord is transcendental. So they surrender to the Lord. They were perfect. Now they become more perfect. And then they did devotional service. They become most perfect. You see? That's how it works. ओके, तो प्रभु जी ने बताया कि यही एक है जो हाईएस्ट तरीका है हमारे प्योरिफिकेशन, हमारे कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने का, जो हमें प्रभुपाद ने दिया है। और ये प्लेटफॉर्म बहुत सही है जो हमें प्रभुपाद ने दिया, एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। और जैसे हम एग्जांपल प्रभु जी ने दिया है, जैसे 4 कुमार का, जो 4 कुमार है